मूकपञ्चशती कटाक्षशतकं 51-60। काषायम् अंशुकमिव प्रकटं ददानः माणिक्यकुण्डलरुचिं ममताविरोधी। श्रुत्यन्तसीमनिरतः सुतरां चकास्ति कामाक्षि तावककटाक्ष यतीश्वरोऽसौ। पाषाण एव हरिनीलमणिर्दिनेषु प्रम्लानतां कुवलयं प्रकटीकरोति। नैमित्तिको जलदमेचकिमाततस्ते कामाक्षि शून्यमुपमानम् अपाङ्गलक्ष्म्याः। शृङ्गारविभ्रमवति सुतरां सुलज्जा नासाग्रमौक्तिकरुचाकृतमन्दहासा। श्यामा कटाक्ष सुषमा तव युक्तमेतत् कामाक्षि चुम्बति दिगम्बर वक्त्रबिम्बम्। नीलोत्पलेन मधुपेन च दृष्टिपातः कामाक्षि तुल्य इति ते कथमामनन्ति। चैत्येन निन्दति यदु अन्वहमिन्दुपादान् पातोरुहेण यदसौ कलहायते च। ओष्ठप्रभापटलविद्रुम मुद्रिते ते भ्रूवल्लिवीचि सुभके मुखकान्तिसिन्धौ। कामाक्षि वारिभरपूरण लम्बमान कालाम्बुवाहसरणिं लभते कटाक्षः। मन्दस्मितैर्थ मणिकुण्डलांशु सम्पर्कलोहितरुचिः त्वदपाङ्गदारा। कामाक्षि मल्लिकुसुमैः नवपल्लवैश्च नीलोत्पलैश्च रचितेव विभाति माला। कामाक्षि शीतलकृपारसनिर्जराम्भः सम्पर्कपक्ष्मलरुचिः द्वदपाङ्गमाला। गोपीः सदा पुररिपोः अभिलष्यमाणा दूर्वाकदम्बकविडम्बनम् आतनोति। हृत्पङ्कजं मम विकासयतु प्रमुष्णन् उल्लासमुत्पलरुचेः तमसां निरोद्धां। दोषानुषङ्गजडतां जगतां धुनानः कामाक्षि वीक्षणविलास दिनोदयस्ते। चक्षुर्विमोहयति चन्द्रविभूषणस्य कामाक्षि तावककटाक्ष तमः प्ररोहः। प्रत्यङ्मुखं तु नयनं स्तिमितं मुनीनां प्राकाश्यमेव नयतीति परं विचित्रम्। कामाक्षि वीक्षणरुचा युधि निर्जितं ते नीलोत्पलं निरवशेष गदाभिमानम्। आगत्य तत्परिसरं श्रवणावतंस व्याजेन नूनम् अभयार्तनम् आतनोति।